Hi guys, welcome to the first episode of Football Weekly. And today we have with us Zeeshan bhai. So I'll request Zeeshan bhai to turn on the camera. So hi Zeeshan, how are you? I'm good। आप कैसे हो शाश्वत भाई? आप बताओ। मैं तो बढ़िया हूँ, चल रहा है सब जैसा तुझे बताया चलिए। ही था मैंने। हाँ, हाँ, बस चल रहा है। तो तुम्हारा कैसा चल रहा है? कॉलेज में सीन सब बाकी सब कैसा चल रहा है? और College scenes are going good। हाँ, I'm going to VIT Chennai for like as a speaker on 30th। या So एंड हाँ वो like एंड that's मेरे को there। पब्लिक को ये बताना है कि जिशान ऑल्सो डिड अ पॉडकास्ट रिसेंटली, तो आप मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वो भी पॉडकास्ट जाके सुन सकते हो। एंड साथ साथ ये भी बताना था कि एज यू कैन सी जिशान इज वेयरिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड जर्सी एंड आई एम वेयरिंग मैनचेस्टर सिटी जर्सी, सो वी बोथ आर मैनचेस्टर फैंस बट ऑब्वियसली राइवल्स। सो Different stadiums, but okay। yeah, so Zishan, how has your Manchester United journey been? Like अभी तक कब से मतलब तुम फैन हो, कब से फॉलो कर रहे हो? हाँ ठीक है। So I'll start on the beginning। So basically क्या हुआ था कि when I was in class fifth, लाइक हम्म उस टाइम पे फुटबॉल एंड उस टाइम पे लाइक फुटबॉल आना वाज जैसे इफ यू नो फुटबॉल यू विल बिकम पार्ट ऑफ दैट एलीट ग्रुप, जैसे ऐसे हम्म बहुत कूल से ग्रुप में बन जाते थे। वो हम्म शाश्वत भी रिलेट कर सकते हैं। ही हैज बीन माय सीनियर इन स्कूल इटसेल्फ। तो हाँ हाँ uh, हाँ तो लाइक उस टाइम पे आई स्टार्टेड रिसर्च वगैरह करना स्टार्ट किया था। उस टाइम पे ऑब्वियसली दो नाम्स पता थे, मेसी रोनाल्डो, उन दोनों को रिसर्च किया। हम्म मैनचेस्टर यूनाइटेड का थोड़ा थोड़ा पता था उस टाइम, बिकॉज दैट वाज द टीम एट दैट टाइम। हाँ, फर्ग्यूसन वाज प्राइम देयर, टाइम सो चल रहा था। ऑब्वियसली या प्राइम टाइम चल रहा था। 13 वाज फर्ग्यूसंस लास्ट, बट हम्म या सो आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग इन 12। जब डेविड डेया नया नया स्काउट होके आया था, तो फ्रॉम दैट टाइम टिल हम्म डेयाज एग्जिट मैंने यूनाइटेड को लाइक उसका पूरा देखा है, राइज फॉल एंड लाइक गेटिंग बैक अप एंड ऑन। सो आई बीन फॉलोइंग यूनाइटेड फ्रॉम 2012। उस टाइम पे उतना आइडिया नहीं, मतलब नया नया जानता था। उस टाइम पे ये पता था कि रोनाल्डो यहाँ पे खेला हुआ है, एंड देन बाकी प्लेयर्स को धीरे धीरे जानने लगा। हम्म And then I got like introduced to Wayne Rooney, who is currently my favorite, although he has been retired for or almost a year now, but still like वो मेरा favorite player है अभी भी। Like that guy was pure football। या कोई किसी एब्सोल्यूट से लेजेंड like फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। हाँ, एब्सोल्यूट लेजेंड फॉर यूनाइटेड एट इवन इन फर्ग्यूसन्स बुक जो है उसमें ही हैज रिटन कि रूनी एट वन पॉइंट वाज अ बिगर प्रोस्पेक्ट देन रोनाल्डो, बट लाइक या वो दैट्स व्हाट ही सेड। बट व्हाट आई बिलीव इज ड्यू टू हिज लॉयल्टी विद यूनाइटेड वो उतना ग्रो नहीं कर पाया जितना रोनाल्डो ग्रो कर गया आफ्टर मूविंग टू मैड्रिड। So yeah, so 2013 say like the journey has been going okayish cause Ferguson का exit 13 में, then Moyes, लुई वान गाल, मोरिनियो। मोरिनियो के टाइम पे चीजें थोड़ी बेटर हो गई थी, बट देन अगेन मोरिनियो की फैंस के साथ इश्यूज हो गए थे। कुछ प्लेयर्स जैसे फॉर एग्जांपल लुक शॉ के साथ बहुत इश्यूज हुए थे। डिवाइड हो गई थी टीम प्लस दो पार्ट्स में। काफी काफी ज्यादा डिवाइड हो गई थी। ऑल्दो दिस इज कमेंडेबल दैट ही won the Europa, I guess, with that team, हाँ, विद यूनाइटेड। which is pretty commendable. हाँ Although he was Mourinho, so yeah. Then after Mourinho came Ole. हाँ, ओले विकेट के फॉर टाइम विकेट। पे दैट टीम तो लाइक ऐसा स्टेबल हो गई, बट हाँ that like initially the team was good. The reason being that ओले सबके like ओले like ओले को सुपर सब क्यों बोलते थे, like अपने 1999 का गोल किया था, ट्रेबल विनिंग गोल जब ओले ने किया था, तो द रीजन ही वाज कॉल्ड सुपर। लाइक टैक्टिक्स एनालाइज करता था, देखता था कौन सी फॉर्मेशन है एंड कौन से वीक पॉइंट्स है, एंड व्हेन ही यूज्ड टू कम वो हाँ उन्हीं जगह पे अटैक करता था। दैट वाज लाइक वन ऑफ द रीजंस ओले को सुपर सब बोलते थे। प्लस ओले एक्चुअली वाज अ सुपर सब स्टार्टिंग में, इफ यू रिमेंबर पीएसजी को चैंपियंस लीग में डिफीट करना, व्हिच वाज अ प्रीटी हम्म बिग डील फॉर यूनाइटेड बैक देन, हाँ। बिकॉज उनकी टीम में ही राशफोर्ड बहुत यंग यंग सा था, प्लस लाइक बहुत अच्छे, मतलब At द that प्लेयर्स time, वर PSG was also हाँ growing very fast. बहुत हाँ अच्छी टीम बन पीएसजी रही वाज थी। एक्चुअली ग्रोइंग वेरी वेरी हम्म, फास्ट।
उस टाइम पे उसको पीएसजी को डिफीट करना वाज अ वेरी बिग डील गिवन द फैक्ट कि ओले एट दैट टाइम वाज अ सब्स्टिट्यूट मैनेजर व्हेन मोरिनियो वाज sacked. हम्म So the point with Ole, the two reasons which I think the two or three reasons are there, which I think जिसकी वजह से Ole अब मतलब बाद में कंटिन्यू नहीं कर पाया था. First one was that as I said he was a super sub, वो एनालाइज तो करता था फॉर्मेशन टैक्टिक्स को अपोजिंग टीम की, हम्म बट वो एक टीम को एक ही टैक्टिक से देखता था. जैसे मोरिनियो का नहीं है कि बस पार कर देता है. हम्म. No matter whatever it is, he always parks the He bus. always gives us तो the से results. जो चाहिए वो दे ही सो देता है. बहुत हाईली डिफेंसिव कर देगा. सो विथ ओले इट वाज लाइक कि वो एक क्लब को देखेगा, उसके टैक्टिक रीड करेगा, उसके वीक पॉइंट्स निकालेगा, हम्म बट जब नेक्स्ट टाइम दैट क्लब प्लेज अगेंस्ट यू ही वोंट अपडेट हिज टैक्टिक्स. उसका रहेगा कि ये पुरानी फॉर्मेशन के साथ खेल रहे हैं, दैट्स व्हाई सेम टैक्टिक के साथ जाते हैं, विल अगेन स्कोर मोर गोल्स. ऑल्सो दैट वाज नॉट द केस विद अ लॉट ऑफ क्लब्स, बिकॉज पीएसजी के साथ फर्स्ट टाइम इट वाज लाइक pretty good performance. लिवरपूल के साथ first time it was a pretty good performance. Even with City, it was a pretty good performance for like the first time. But हम्म. फिर second time से उन्होंने भी tactics change करना start किए, and then I guess उसके बाद उतने अच्छे results नहीं आए. And what So and that what do you want to say about Eric Ten Hag? Like कुछ अच्छा तो um changes दिखा है इनके आने में. I mean yeah, like the team has been acting more disciplined. हम्म To be fair, हम्म पिछले सीजन कोई ऐसे अब अगर मैं रख के बोलूं तो द हम्म टीम हैज बीन एक्टिंग मोर डिसिप्लिन्ड, मोर रिस्पॉन्सिबल, एंड more responsive to player calls वगैरह, more active जैसे मैं कहूँ. I mean with Ole उसका ये था कि Ole used to give a lot of छूट to all the players basically. काफी ज्यादा फ्री विल दिया हुआ था players को. That's the reason, because I mean see, being a manager of a club like United, you have to be managing big personalities, and for that you need to have that commanding जैसे फर्ग्यूसन का था when he managed Beckham, and Beckham I guess was the like biggest personality player at his tenure, because Ronaldo was not as big Not at that as he time. is now, हाँ because वो उसका ग्रो नहीं starting किया था उस starting टाइम का पे भी. phase था. हाँ. So even with Beckham, Beckham started when he went to सा हॉलीवुड का सीन बना था, so he started acting like a big personality, अपने हिसाब से कमांड करना हम्म वगैरह. Then हम्म. उसके बाद ही then came the boot incident, if आपने सुना हो तो. ऐसा उसने अपना इंसिडेंट है? बूट कौन सा मारा था. इंसिडेंट? बूट मारा था हाँ फर्ग्यूसन ने हाँ हाँ बेकम को. heard about it, heard about it. तो उसके बाद से मतलब वही है कि तुम चाहे जितने भी बड़े पर्सनालिटी हो जाओ, आई एम कंट्रोलिंग दिस क्लब, I'll be हम्म at the helm of it. तुम नहीं बताओगे मुझे क्या करना. I'll be the one deciding the tactics, and I'll be the हम्म. one checking if you should start or be as a substitute. तो हाँ. वो चीज ओले में कभी दिखी ही नहीं. ओले had his favorites, and हम्म. उसका he was like that lenient teacher जिसको सब ऐसे थोड़ा सा पागल बना के बाहर चले जाते हैं. हाँ तो उसी का ओले वाज लाइक दैट. नुकसान भी हुआ यूनाइटेड को. तो विथ ओले तो यही हुआ था कि आप कुछ बोल रहे थे ना. मैं कह रहा था कि यही चीज बैकफायर की मैनचेस्टर यूनाइटेड को. ट्रू, मतलब आई मीन अगर इफ यू आर नॉट अ कमांडिंग मैनेजर, इफ यू डोंट हैव दैट सेंस ऑफ डिसिप्लिन, लाइक इवन टेन हैग हैज दैट. If I remember, there was this match. I don't remember the club United was playing against. So हम्म after United lost to them, Ten Hag made them do like 10 rounds of the entire stadium, I believe. So exercises like this or punishments like this, even the starting में obviously बहुत ज्यादा hectic है for all इवन the ही players, बेंच्ड but रोनाल्डो then यार. again इवन ही बेंच्ड रोनाल्डो को. yeah, so that was a pretty big move honestly, because Ten Hag is also in his growing वाला stage. देखो आप एक चीज notice करो, after Ferguson जितने भी coaches आए थे apart from Ole or before Ole, they were at they were past their prime. मोरिनियो का 2008 वाली चेल्सी के बाद मोरिनियो का प्राइम ऐसे धीरे धीरे ऐसे एक स्टेबल तक रहा था जो नीचे जा रहा था. हम्म मोरिनियो आफ्टर केम आफ्टर हिज प्राइम. डेविड मोयस का भी काफी एज हो गई थी. वैन गाल भी अब तो नीदरलैंड्स मैनेज कर रहा है, बट उस पॉइंट हम्म पे वैन गाल का भी ऐसा, आई मीन यू कांट. वैन गाल को अगर आप यूनाइटेड में उसका फॉर्मेशन सही नहीं बैठता, नीदरलैंड्स का प्ले देखो और फिर आप हम्म यूनाइटेड का प्ले देखो, सो वो थोड़ा सेंसलेस चीज था अपॉइंटिंग वैन गाल एज
like as the manager. But ठीक है, that's not the point. वो हो गया. And even after Ole, Ralph Ranić वो भी काफी like एज, वो तो इनफैक्ट अपना जॉब रोल ही चेंज करके आया था. He was हाँ, उसको not like टाइम he बहुत was कम not दिया a, गया था, मेरे हाँ पॉइंट ऑफ उसको व्यू में उसको टाइम टाइम बहुत कम दिया गया था। उसको टाइम तो कम दिया ही गया था, प्लस उसकी फॉर्मेशन, प्लस उसकी बात ही नहीं मानी जा रही थी. ग्लेजर्स क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी से क्लब चलाना है तो व्हाट कैन यू डू. हम्म। अभी क्लब की एक्विजिशन की बात कब से चल रही है, अभी पता नहीं पक्का होगा भी कि नहीं होगा, यू नेवर नो. आई मीन होपफुली हो जाए, हम्म। कतर मनी. कतर मनी। तो स्पीकिंग अबाउट वैनगार्ड। हाँ, नो हाँ, नो, सो लाइक स्पीकिंग नॉट अबाउट जस्ट वन गार्ल, ऑल राल्फ, द कोचेस इन जनरल. या ऑल द कोचेस इन जनरल। तो यही हुआ फिर. आई मीन यही है कि विद टेन हैग देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉमिस, बट obviously with the current two matches of the season, हाँ, there is a lot of work to be done as well. we'll move to तो that topic later. We'll move to ओके, that topic आई later. मीन बता रहा हूँ लाइक हाँ हाँ। जस्ट the like opening part of it कि like there is a lot of work to be done as well. तो ये है. एंड आई गेस यही जर्नी रही है मेरी, seeing United like going from coach to coach, changing their style of play. हम्म um, अच्छा लगा लाइक, थोड़ा सा चीजें अच्छी हो गई थी जब 2021 में when Ronaldo came. हम्म। Like that was actually a very nice thing. Obviously, it did not end the way everyone wanted it to be, या but still the memories have been good with like पूरा Ronaldo फ्लड हुआ था ट्विटर पे. हाँ उस पॉइंट पे आई यूज्ड टू राइट फॉर दिस वेबसाइट कॉल्ड यूनाइटेड डेविल्स. अभी तो नहीं है, या कॉलेज वर्क की आई वजह से नो लाइक दैट। आई लेफ्ट, बट या. So like I was live covering it live, so like yeah, काफी अच्छी memories हैं उसके साथ हम्म। with that transfer. हाँ हाँ तो ये हुआ. प्ले भी एक पॉइंट तक काफी अच्छा था, ऑब्वियसली फिर चीजें थोड़ी डिफरेंट हो गई, हाँ। बट हाँ ठीक है. सो लाइक द मेमोरीज हैव बीन वही बिटर स्वीट टाइप की है. विद आफ्टर फर्ग्यूसन लेफ्ट काफी चीजें बिटर हुई हैं, स्वीट हम्म थोड़ी सी होना स्टार्ट हुई हैं. हम्म। ऑब्वियसली अभी तो थोड़ी नहीं है, बट पिछले सीजन में यूनाइटेड हैज यार been लास्ट playing well सीजन वाज compared to the. अनएक्सपेक्टेड टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप 4 फिनिश ला पाएगी। ओके, मतलब मेरा तो ये था कि मतलब ऑनेस्टली यस, बिकॉज बिकॉज अंडर अ कोच आपको कम से कम एक सीजन लगता है सेटल इन हाँ होने के लिए. या तो ट्रू। या दैट वाज ऑनेस्टली प्रेटी सरप्राइजिंग फॉर यूनाइटेड, बट देन अगेन इट्स यूनाइटेड, सो यू नेवर नो, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. एंड दिस इज समथिंग आई हैव लर्नड एज अ फैन, अपार्ट फ्रॉम लॉयल्टी. या एज अ फैन आई हैव लर्नड कि यूनाइटेड हैज लाइक इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है. ओके ओके, सो या. we have talked a lot about United's history and managers. So we'll move towards that topic, like the upcoming season, the transfers thing. But उससे पहले बात कर लेते हैं हम लोग नेमार की, because हम्म. as everyone knows that Neymar is coming to India in November. या. If he does not get injured, that's the main thing. इफ यू. अगर उसे इंजरी नहीं होती है तो वो जरूर आएगा. तो what is your यस. take on that, Zeeshan? Like इंडिया के लिए क्या चेंजेस ला सकता है, या इंडियन फुटबॉल के लिए, या इंडियन क्राउड के अंदर क्या वो इम्पैक्ट ला सकता है? I mean, obviously Neymar is like one of the biggest personalities in football, and as like उसको popularly state किया जाता है, the prince who never became the king. लेकिन जो या, and वो आपका favorite player भी है, so there's that as well. वो So मेरे को उसको गाली I देने mean. का मन किया ना। एट द एज ऑफ 31 उसके पास सारी स्किल्स है, एंड देन ही डिसाइडेड दिस डम uh, मूव। यार मेरा तो मूड ही खराब I हो mean वही पॉइंट है, it was his chance to shine again after Messi left. गया। उस हाँ पे पूरा चीजें शिफ्ट हो जाती है, cause there's that. बट ठीक है, चलो वो पॉइंट नहीं था. पॉइंट इज कि इज कमिंग टू इंडिया. या किसके अगेंस्ट ड्रॉ किया है नेमार मुंबई के सिटी क्लब एफसी, ने? मुंबई सिटी एफसी। मुंबई सिटी एफसी के. हाँ, सो लाइक इट्स लाइक काफी मजेदार होगा if he does not get injured. Disclaimer, if he does not get injured, उस कॉन्टेक्स्ट में बातें हो रही हैं. हाँ तो नेमार आएगा, काफी लोगों के लिए ये पहला मैच होगा, एंड इट शुड बी अ स्वीट मेमोरी इफ नेमार प्लेज. सब्स्टिट्यूट हुआ तो फिर तो स्टोरी डिफरेंट है, बट एंड द पीपल हु लाइक जो लोग नया नया स्टार्ट करेंगे फुटबॉल, उनके लिए इट वुड बी अ प्रेटी लाइक ऐसा हाईलाइटिंग सी मेमोरी, एंड दिस इज समथिंग दे कैन ऑलवेज लुक बैक टू आगे जाके. and and according to you, will it impact football
in India? Like, will it boost it I at mean, that moment? या surely फिर it कुछ would. टाइम का हाइप होगा फिर वैसे ही हो जाएगा? I mean, even with like जब COVID आया, when lockdown happened, हम्म उस point से there is a lot of subsequent like increase in the football fans all over the country because उस time हम्म पे channels थे जैसे यश का हो गया, ड्रॉग बाबा हो गया, मोहक हो गया, हम्म like they have grown exponentially because plus like with live FIFA streams talking to people this is something जो कि actually telling to the fans this is something शाशद भी और मैंने ही प्लान किया था but फिर my college started हाँ so वो पूरा हो नहीं पाया so although hopefully in the future we will hopefully हाँ तो हाँ ऑब्वियसली। हाँ तो क्या कहते हैं so yeah उस पॉइंट से जो फुटबॉल फैंस बढ़े हैं it would be pretty great to see that online reception ऑफलाइन में कन्वर्ट होते हुए जो ऑनलाइन रिसेप्शन आता है फुटबॉल को लेके वो जब ऑफलाइन में आएगा एंड बहुत लाइक काफी ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है पिछले 2-3 इयर्स में सो देखने में मजा तो बहुत आएगा कि कितने लोग अब क्या क्या एक्चुअल सीन चल रहा है। एंड स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी जो नेमार को कहते हैं, हाँ मतलब लाइक नेमार टू सी दे वांटेड नेमार टू विन अ बैलन डॉर। या सपना सपना ही रह गया। मतलब सोचा नहीं था मैंने कि 2015 चैंपियंस लीग फाइनल गोल स्कोरर एक, मतलब उसके ट्रू बाद से उसने सारे मूव गलत लिए, सारे एक हाँ एक मूव उसने गलत लिया एंड इट एंडेड अप बीइंग देयर। एज तो फार एज ठीक है। आई हर्ड वो क्या लाइक जब नेमार मूव टू PSG आई गेस टू एग्जिट। डज नॉट गेट इंजर्ड डिस्क्लेमर इफ इट डज नॉट गेट इंजर्ड उस कॉन्टेक्स्ट में बातें हो रही हैं। हाँ तो नेमार आएगा काफी लोगों के लिए ये पहला मैच होगा एंड इट शुड बी अ स्वीट मेमोरी इफ नेमार प्लेज सब्स्टिट्यूट हुआ तो फिर तो स्टोरी डिफरेंट है बट एंड द पीपल हु लाइक जो लोग नया नया स्टार्ट करेंगे फुटबॉल उनके लिए इट वुड बी अ प्रेटी लाइक ऐसा हाईलाइटिंग सी मेमोरी एंड दिस इज समथिंग दे कैन ऑलवेज लुक बैक टू आगे जाके। and according to you, will it impact football in India? Like, will it boost it आई at मीन that moment? या श्योरली फिर इट कुछ वुड टाइम का हाइप होगा फिर वैसे ही हो जाएगा? I mean, even with like जब COVID आया when lockdown happened, हम्म उस point से there is a lot of subsequent like increase in the football fans all over the country because उस time हम्म पे channels थे जैसे यश का हो गया, ड्रॉग बाबा हो गया, मोहक हो गया, हम्म like they have grown exponentially because plus like with live FIFA streams talking to people this is something जो कि actually telling to the fans this is something शाशद भी और मैंने ही प्लान किया था but फिर my college started हाँ so वो पूरा हो नहीं पाया so although hopefully in the future we will hopefully हाँ तो हाँ ऑब्वियसली। हाँ तो क्या कहते हैं सो या उस पॉइंट से जो फुटबॉल फैंस बढ़े हैं इट वुड बी प्रेटी ग्रेट टू सी दैट ऑनलाइन रिसेप्शन ऑफलाइन में कन्वर्ट होते हुए जो ऑनलाइन रिसेप्शन आता है फुटबॉल को लेके वो जब ऑफलाइन में आएगा एंड बहुत लाइक काफी ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है पिछले 2-3 इयर्स में सो देखने में मजा तो बहुत आएगा कि कितने लोग अब क्या क्या एक्चुअल सीन चल रहा है। एंड स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी जो नेमार को कहते हैं, हाँ मतलब लाइक नेमार टू सी दे वांटेड नेमार टू विन अ बैलन डॉर। या सपना सपना ही रह गया। मतलब सोचा नहीं था मैंने कि 2015 चैंपियंस लीग फाइनल गोल स्कोरर एक, मतलब उसके ट्रू बाद से उसने सारे मूव गलत लिए, सारे एक हाँ एक मूव उसने गलत लिया एंड इट एंडेड अप बीइंग देयर। एज तो फार एज ठीक है। आई हर्ड वो क्या लाइक जब नेमार मूव टू PSG आई गेस एग्जिट। 200 million था राइट। 200 हम्म रिपीट करो भैया आवाज चली गई आपकी। 222 बोला मैंने, 222। यप यस यस 222 million का बट आई डोंट थिंक वो उसका डिसीजन था दैट वाज बाटोम्यू एज फार एज आई हर्ड वो आपको पता Yeah, होगा। that was a release clause as well, and he wanted to outshine himself or outshine हाँ in particular. आई मीन आउटशाइन तो नहीं कर पाया ऐसा बट स्टिल ठीक है हाँ उसके बाद से मूव्स गलत लिए एंड आपको ज्यादा वो चीज बेटर पता हो गया यू हैव बीन हिज फैन
मैंने तो Yeah, लाइक like if I आउटसाइड would से have been there, I would have taken the same decision because knowing कि एक बंदा है जो सारा हम्म, क्रेडिट ले जाएगा, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग मेसी और समथिंग लाइक, हाँ सारा क्रेडिट ले जाएगा क्योंकि कुछ भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा था तो एवरीथिंग टू मेसी, या so which he Neymar felt and he took a bad decision obviously, gone somewhere else unlike PSG, और PSG में या फिर PSG में रह के इंजरी कम करके चैंपियंस लीग जिता देता, लाइक एक बार उसने फाइनल में भी ले गया था यप, जो सो ट्रू। बायर्न। ऑल्दो उसके बाद वो जहाँ से भागा, दैट सेम थिंग केम टू पीएसजी, सो कुछ चेंजेस ज्यादा हुए नहीं पीएसजी में भी। हाँ, Although he पार्टी had प्रोन his बन गया था time, ना। yeah, he had his time to shine himself, but वो due to injuries and और भी काफी reasons की वजह से उसने उनको सही से यूटिलाइज नहीं किया। So yeah, there's that, I mean, क्या ही कर सकते हैं, you have to live with it। या बट आई एम वेरी एक्साइटेड, ऑल द हाँ फैंस वो विल बी जब उसको इंडिया में खेलते हुए देखेंगे, मजा तो आएगा, पुणे में, मजा against तो आएगा। मुंबई सिटी एफसी इन द एएफसी चैंपियंस लीग। हाँ तो कि होगा, अब आते हैं यहाँ पे यूनाइटेड एंड सिटी। तो फर्स्टली ये बताओ शान कि तुम्हारा। like the two matches हुए हैं, first was with Wolves, हम्म। the second one was with Spurs। So हम्म। honestly right now given the fact that like इतना बुरी परफॉर्मेंस है दोनों में, इवन दो 1-0 वुल्स के अगेंस्ट इन्होंने जीता, बट हम्म। स्टिल लाइक दिस, अभी तक जो पिछले दो मैचेस देखे हैं, ऑल्दो इट्स हम्म। सरप्राइजिंग अंडर एरिक टेन हैग, बट व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि पिछले दो हम्म। मैचेस में डायरेक्शन नहीं है, लाइक बहुत ऐसे लॉस्ट से लग रहे हैं। हो सकता है कि लाइक सीजन के स्टार्टिंग वो सेटल इन करने में इशू इश्यूज हो, बट देन अगेन देयर हैव बीन टीम्स हु हैव वॉन, सब तो हारे नहीं है ना ऑब्वियसली। तो हम्म। वो तो आई मीन कम्प्लीटली तो किसी को भी आइडिया नहीं है क्या है वो, बट हाँ वो हाँ। तो लाइक वो तो वी हैव टू सी विद टाइम इफ इट improves or not currently। Although my season expectations is obviously to again, for me it would be to win फिर- F FA Cup, like FA और कारबाओ। चैंपियंस लीग में वी हाँ सी हाँ। कहाँ तक जाती है यूनाइटेड, आई हम्म। होप इट मेक्स हम्म। टिल सेमीफाइनल्स। and with हम्म। Premier League also, like given the fact that City is playing good, and we'll see. We'll see with the Premier League currently no expectations at all. We have to see some more matches in order to understand कि like क्या चल रहा है और बेटर तरीके से। अभी तो प्रीमियर लीग से तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, अपार्ट फ्रॉम फिनिशिंग लाइक टॉप फोर विच इज, वो तो सबसे ऑब्वियस एक्सपेक्टेशंस होती है हर साल की। हाँ बट हाँ उसके हाँ। अलावा विद करंटली आई यूनाइटेड वांट, यू हैव दिस एक्सपेक्टेशन। सो उसके हम्म। अलावा इट इज लाइक फॉर नाउ आई वांट देम टू विन आइदर एफए और Carabao। Apart from हम्म। that, I want them to at least go to the semi-finals in the Champions League। मन तो मेरा ये है कहने का कि विनिंग इट, बट विथ लाइक अभी लाइक विथ द न्यू कोच एंड ऑल सेटल इन करने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा आई थिंक, एंड द इंजरी क्राइसिस सॉल्व हो जाए सबसे पहले, दैट टू। सो या, टॉक अबाउट मैनचेस्टर सिटी, तो both the games have been awesome, although न्यूकासल के अगेंस्ट कन्विंसिंग नहीं था बिकॉज ऑफ द इंजरीज जो हो रही है, डेब्रॉयन इंजर्ड हो गया है, और फिर अभी बैक पोजीशन अभी उतनी सॉर्टेड नहीं लग रही है, लाइक ग्वार्दियोल को लेफ्ट बैक खिलाया जा रहा है इवन दो आके वाज डूइंग गुड लास्ट सीजन। तो यही है कि अच्छा जा सकता है बिकॉज नेक्स्ट जो 3 से 4 गेम पास वो उसके कमांड में ही है, अगर वो जीत जाता है तो वो पेस पकड़ लेगा और उसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से वो सीजन अच्छा कर सकता है, इफ नॉट द टाइटल एटलीस्ट सेकंड तो आ सकता है प्रीमियर लीग में। और चैंपियंस लीग में दिस टाइम आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, आई एम वेरी हैप्पी कि एक साल जीत गए, अब 2 साल बाद, अब 2 साल बाद भी जीतो तो आई विल बी हैप्पी, बट एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग देम टू रीच सेमीफाइनल्स। सीइंग द अदर टीम्स की रियल मैड्रिड में भी बहुत इंजरीज हो रही हैं, यूनाइटेड में भी इंजरीज हो रही हैं, एंड बाकी टीम के जो परफॉर्मेंस है, बायर्न को भी अभी सेटल होना पड़ रहा है विद द न्यू साइनिंग्स दे हैव मेड। yes। तो या तो तुम्हारा मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगले कुछ मैचेस पे क्या कहना है, लाइक
I've seen that कि उसका next to next match is against Arsenal in the Premier League. Yeah, and And the next match Arsenal is is, yeah, say. बोलो बोलो क्या कह रहे थे आर्सेनल को. I was saying that Arsenal is in form. उसने दोनों Yeah, मैच जीता हुआ है. Arsenal तो has been in form and let's ठीक है. So the next match is with Nottingham Forest. Now उसके साथ हाँ. थोड़ा promise है. I mean, no, it's Nottingham Forest. So yeah, there's that. Hopefully we win the next match. हम्म. Although like injuries हैं, but सबसे interesting ये होगा देखने का कि who will be playing left back because Luke Shaw is injured. Malaysia has already been out. The other हम्म. natural left back we had. So we'll हाँ. see कौन left back में रहता है. अभी like these guys are thinking of having signings, but अभी कुछ ऐसा like concrete name अब ऊपर नहीं आया है जितना मैंने like news पढ़ी है. अभी कोई ऐसा कॉन्क्रीट हाँ. नेम ऊपर नहीं आया है जो कि लेफ्ट बैक में यूनाइटेड में आ सकता है. सो वो है. हम्म. विल ऑल वो भी देखने में इंटरेस्टिंग हो कि हाउ डज लाइक होलैंड रिकवर्स. अभी तक तो ऑल्दो until international break there's a chance कि we won't be able to see him. After the international break we will. कि the last match Onana has been like in better form than he was in the first season opening match. क्योंकि Yeah. उसमें ऑल्दो वी वॉन बट ओनाना का लाइक जो सीन था वो थोड़ा लाइक हम्म. डिफरेंट था. प्लस ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क अराउंड हिम सो टेन हैग हैज टू डू दैट. इट्स तो आई माइट बी मिसिंग डेया ओवर हियर बट देन अगेन उसके लिए भी अच्छा था कि दैट ही लेफ्ट बिकॉज ही वाज पास्ट हम्म. हिज प्राइम एंड ऑनेस्टली True. passing your prime and then staying on in the same club लोगों को तुम्हारी प्राइम वाली expectations रहेंगी which sadly हम्म. you can't fulfill. So it was good for Deya to move out. Honestly मैंने तो उसका पूरा rise and fall rise again then moving out सब देखा. हम्म. तो हम्म. yeah it will also be like मजेदार रहेगा देखने में कि डेया जाता कहाँ है. अभी तक तो he is a free agent. हाँ. He's still a free agent, yeah. So like reports तो आ रही है रियाल के like he'll go to Real but again we I never guess know. he's from a Real Madrid academy only, ना? वो Real Madrid से ही आया था मैच. Yeah, I mean he has been associated academy वाला part I don't know but इससे पहले भी he हाँ. has been associated like with Real. तो वो With एक Real. चीज है. Yeah, तो वो था. हम्म. एंड या तो क्या कहते हैं ये हुआ फिर उसके बाद तो हाँ देख सीजन एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि ये स्टेबिलिटी हो जाए फॉर नाउ एंड बात मैंने बताई दी एफए कप वगैरह. And and what are your takes on transfers जो अभी तक हुए हैं? So, like Haaland. currently two major हाँ. transfers हुए हैं. One is Andre Onana, which was honestly a necessity, हम्म. um, cause Daya left. And the good thing is, Onana is from Ajax. हम्म. Um, Ten Hag also like Ten Hag was in Ajax. So Ten Hag हम्म. को like He knows Andre Onana. का yeah हम्म. like a lot of जितने प्लेयर्स आए हैं Ajax से और who have been in Ajax at one point. For example, हम्म. एरिक्सन हो गया, लीचा हो गया, आई गेस मलासिया एक हो और गया. मलेशिया हो गया. सो लाइक हम्म. दीज गाइज एंड ओनाना लाइक नाउ. तो हम्म. इनके साथ ये है कि लाइक टेनहैग नोज देयर स्टाइल ऑफ प्ले एंड लाइक हाउ आयाक्स वर्क्स. तो टेनहैग एक्चुअली उसको पता है कि कोई लाइक इनका स्टाइल ऑफ प्ले क्या है. ऑब्वियसली ओनाना अभी लाइक काफी नया है एनवायरनमेंट में इंग्लिश हम्म. इंग्लिश फुटबॉल के. सो उसको थोड़ा टाइम लगेगा सेटल इन होने में बट ठीक है विद द वे ही इज एक्टिंग स्टेबल डिस्टेबल चलता रहेगा. बट ठीक है आई एम प्रेटी कन्विंस्ड विद दिस परफॉर्मेंस ऑल्दो ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स बट ये बेसिकली स्टार्टर ब्लूज हैं जो हर एक प्लेयर को होते हैं जो किसी फॉरेन कंट्री से आता है. तो विल गिव हिम हिज टाइम. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. And on the other side was Holland. या रासमस हॉलैंड का तो लाइक दैट वाज प्रीटी अनफॉर्चुनेट विद द बैक प्रॉब्लम ही गॉट. सो Mm. उसकी वजह से काफी डिले हो गया है उसको एक्शन में देखना. आई एम प्रीटी एक्साइटेड I have एंड one thing to say. I have one thing to say. Like when Rasmus Holland came, he came with a hype of competing with Erling brought Haaland. So what are your takes on that? Like क्या इतना hype देना अभी से क्या ये सही है? आई मीन Has that potential according to you? उसके लिए तो हम एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं इंग्लिश फुटबॉल में. आई मीन किसी भी प्लेयर को आप ले लो कम्स उसका जिसका थोड़ा सा भी इवन अ लिटिल बिट फेमस व्हेन ही कम्स टू इंग्लिश फुटबॉल. दो चीजें होती हैं. पहला चीज कि ऑब्वियसली उसका लाइक
is playing for English football, playing for the like big leagues, like big clubs like City हो गया, United हो गया, Arsenal, हम्म और like बाकी clubs, तो like उसके for his career it's like वो उसको बहुत like उसको एक आउटशाइनिंग प्लेयर की तरह दिखा सकता है. अपार्ट फ्रॉम इट द इंग्लिश फुटबॉल ऑडियंस उनका ये रहता है कि दे ओवर हाइप लिटरली एवरीवन. सो कोई भी हम्म प्लेयर ऐसा आता है who is associated with one of And the he came big with a big price, I guess. काफी Rosmus. या ठीक है, मेरा ये मुझे नहीं पता, उसका प्राइस का मुझे आइडिया नहीं है, इसको वो कर दूंगा. It was more सो than 80 million euros. तो इधर वे तो वही पॉइंट है कि हम्म इवन आई मीन रोनाल्डो का हाइप वाज डिफाइड, बट देन अगेन वो हाइप के एक्सपेक्टेशंस पे नहीं रह पाया, व्हिच वाज प्रेटी सैड. हम्म वरान वाज हाइप, वरान का हाइप इज गोइंग ओके, बट विथ हिज इंजरीज इट्स लाइक वो थोड़ा सा एक वीक I think पॉइंट है they are वरान का. planning to run this year. Like हम्म. शायद सेल कर सकते हैं वरान को. हाँ, बट आई डोंट थिंक दे विल, cause the mentality he brings from Real, and like जब भी although with a lot, even though with a lot of injuries, whenever he plays very well. So हम्म personally like right now मेरे क्लब में तो दो प्लेयर्स फेवरेट है स्टार्टिंग लाइन में. फर्स्ट इज ब्रूनो एंड द सेकंड वन इज हम्म वरान. तो बिकॉज उन दोनों की मेंटालिटी इज लाइक आई लाइक सम दिस थिंग अबाउट देयर मेंटालिटी. तो उनके लिए कैसे वो विनिंग मेंटालिटी, इवन विद ब्रूनो, ब्रूनो का आप देखो, ब्रूनो केम फ्रॉम कौन सा क्लब था दैट लाइक स्पोर्टिंग. स्पोर्टिंग स्पोर्टिंग. Yes, so Bruno came from Sporting. Sporting का कितना ही रिसेप्शन होता है. Even though he came to this English club, starting में there was a lot of apprehension कि कैसा खेलेगा. Sporting से लेके आए हैं वो. But again वो सबको false proof किया, and he took that captainship from an English player, which is a very big thing, honestly. He has Plus, the number of goals and assists he has made for. वही point, like that's pretty commendable. True. तो वो हो गया. प्लस तो या ब्रूनो के साथ लेट्स सी, ब्रूनो का तो अभी भी काफी अच्छा चल रहा है. ऑल्दो आई हम्म वुड स्टिल रिकमेंड कि वो, बिकॉज द ब्रूनो के साथ एक चीज लाइक जो एक दी ओनली थिंग विच इज लाइक ऐसा उसकी शॉर्ट कमिंग है, इज दैट ही डज नॉट स्टे टू हिज पोजीशन, ही रन्स अ लॉट टू एंड फ्रो. हम्म तो वो एक चीज की वजह से ही ऑल्सो गेट्स टायर्ड लाइक प्रेटी फास्ट एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स. और तो ठीक है, अब वी हैव like You have Casemiro to Casemiro at the handle back. him. हम्म So that is like बस वही है कि उसका उसके भी रेड कार्ड्स आ जाते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज लाइक अ वेरी गुड प्लेयर, ऑनेस्टली लाइक बिग फैन. सो ठीक है, वो भी ये लाइक ऐसे थोड़े प्लेयर्स होने चाहिए जो even मेंटालिटी अरे लाते हैं कि even हाँ. Bruno has been criticized even कि क्या खेल रहा है. रोनाल्डो के टाइम में भी he was said a lot, like उसको बहुत बोला गया है कि यार ये यस. अच्छा नहीं हो रहा है, इसको चेंज करो, सेल्फिश प्लेयर है. या आई मीन ऑनेस्टली फॉर मी ब्रूनो से ज्यादा टीम प्लेयर मैंने किसी को अभी देखा नहीं है, द वे ही एक्ट्स फॉर द टीम एंड ऑल. सो हम्म है लाइक प्रोस्पेक्ट्स है. लेट्स सी, हो सकता है कि ये बिगनर ब्लूज हो, स्टार्टिंग ब्लूज हो क्लब के लिए भी, हम्म cause with a lot of like with new signings like these हो सकता है, but hopefully United gets stabilized. As a fan मैं यही कह सकता हूँ. हम्म So yeah. ओके. सो ट्रांसफर्स से आगे चलते हैं. सिटी मेरे हिसाब से जो ट्रांसफर्स हुए हैं, ग्वार्दियोल एंड डोकू, तो दे वर वेरी मच इम्पोर्टेंट. लाइक अब ग्वार्दियोल को पेप इज ट्राइंग टू कन्वर्ट एज अ विंग बैक, तो कंसेलो इज ऑल्सो मूविंग. कंसेलो को वो टाइम नहीं देगा. इट वॉज वेरी क्लियर सिंस द लास्ट सीजन कि वो कंसेलो को मूव करने के ही में है. एंड महारिस के जाने के बाद राइट विंग खाली हो गया. इवन इन द लास्ट में फोर्डन प्लेड, तो फोर्डन की नेचुरल पोजीशन इज नॉट राइट विंग. सो आई एम वेरी हैप्पी कि जेरेमी डोकू ब्रिंग्स दैट एक्स फैक्टर टू द टीम. उसके पास पेस है हम्म. and also the agility which Mahrez had, तो that would add up to the front three. और यही है कि मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशंस ये सीजन अच्छा जाने वाला है. पिछले जैसा सीजन नहीं हो. एक री व्हाट से रीबिल्ड टाइप का सीजन है, बिकॉज वंस यू विन समथिंग
once you win some, एक अचानक सीजन आ जाता है कि अब फिर से रीबिल्ड करके वहां पहुंचना है. ऑल्दो हम्म, सिटी हैज एवरीथिंग, बट आई स्टिल फील कि कुछ कुछ चीजें पिछले सीजन से कम है, बिकॉज इंजरी आ गई है, या फिर मेंटालिटी चेंज है कि लाइक हाँ. नाउ वी हैव अ, सो राइट ना देना पिछली हम्म, बार के. अकॉर्डिंग टू, सो so that was हम्म, it for Manchester City and Manchester United. Zeeshan, before going, what do you want to जाते जाते क्या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑडियंस को देना चाहते हो, या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को स्पेशली देना चाहते हो? आई मीन, um, हो सकता है मैं तो आई बीन अ फैन फॉर मोर देन 10 years नाउ. आई थिंक 11th हम्म. ईयर चल रहा है ऑफ मी एज अ फैन. बट हम्म. फॉर द पीपल हु आर जस्ट लाइक स्टार्टिंग, और इवन द पीपल जो 17-18 से फैंस बने, जिन्होंने एक्चुअल यूनाइटेड नहीं देखा है जो इट वाज विद फर्गी. हम्म. ऑल्दो हम्म. ऑनेस्टली मैंने भी नहीं देखा, बट आई हैव बीन देयर, आई हैव सीन द मेंटालिटी हाउ लाइक एक्चुअल यूनाइटेड वाज. तो हम्म. वेल, व्हाट आई वुड से इज कि एज अ फैन होप मत लूज करो. honest believe me, like I've been United's fan. तो just don't lose hope. नए मैनेजर पे ट्रस्ट करो, as David Moyes said, no, as Alex Ferguson said in his farewell जो ओल्ड ट्रैफर्ड पे हुआ था. Your job is to basically back the manager as much as possible. क्रिटिसाइज हाँ. करो अपनी जगह पे है, बट डोंट शन हिम. एंड ऑफ द डे वो भी अपनी पावर में जो है सब कर सकता है. द रियल प्रॉब्लम इज लाइक वो जो ऐसे टॉप पे बैठा है द मैनेजमेंट, उसके बिना इवन वो भी साइनिंग्स नहीं कर सकता है. सो वो देखो, ट्रस्ट द प्लेयर्स, बैक द प्लेयर्स, कोई भी वो हो. उसके अलावा कभी भी कुछ लाइक ऐसे रैंडम चिल कन्वर्सेशन कैरी आउट करना हो तो मैं अपना ट्विटर हैंडल लाइक शाश्वत भी आई गेस डाल ही देंगे. Come हम्म. there, I started my account as a football fan. अभी तो like it's evolved into tech, but I'm obviously always up for football conversations. So yeah, my socials ले लो. Just we can have a talk. We can have a very chill talk. And the ending note is trust the process. That's what I would say. Just trust the process, and hopefully better results निकल के आएंगे. या एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हर फ्राइडे या हर एक बार ऐसा हर बार कुछ लाने का सोचा है. हम्म. एंड मूव बी एडिंग अप टू इट डे बाय डे. एंड इफ यू पीपल आर, भी आ सकते हो. और तारा हम दोनों रहेंगे ही मोस्ट प्रोबेबली. हाँ. एंड बेसिक फुटबॉल की बात करेंगे आगे से. इंडियन फुटबॉल की बात भी कर सकते हैं, हम्म. और मैच प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन यू पीपल, लाइक तुम लोग क्या देखना चाहते हो. एंड या दैट्स इट. सी यू इन That's it. नेक्स्ट व्लॉग. अगली बार से if we get good reception, Shashwat we will be sharing out a Google form for all the like fans जो आना चाहते हैं इस फुटबॉल वीकली में. And उस फॉर्म में like depends on the responses, we'll start a fan section as well. या सो बाय गाइस.